Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss some important questions of the chapter heredity. So let's start. Now the first question is explain heredity. Now the transmission of characters from parents to offspring is known as heredity. Fertilized egg or zygote carries hereditary information. The zygote develops into a particular type of offspring only. Thus, egg laid by a sparrow hatch into sparrow and dog reproduce to give birth to pups only. So, hereditary is simply, it is the transmission of characters from parents to offspring. जो characters जो है, जो transfer होते हैं with through genes, okay, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी. ओके, और ये जो ट्रांसफ़र होता है बिकॉज द एग्स और यू कैन से द फर्टिलाइज एग या जाइगोट वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है दोनों ही पेरेंट्स की, क्योंकि जो स्पर्म्स और एग्स दे फ्यूज एंड दे कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सोर्सेज. लाइक अगर स्पर्म्स की बात करें तो पेरेंट्स से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, और एग की बात करें तो जो भी मदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, एंड दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू द offspring. When the fertilization will occur, zygote will be formed, then this zygote will carry the information of both the parents. Next question, what is the study of heredity and variation called? So the study of heredity and variation is known as genetics. Now this question sometimes it is asked in 1 marks ये question है. Okay, now next question is explain variation. Variation means some individual diversity in the organism of one generation from that of the parental generation. Means differences, जो differences हम observe करते हैं parents और offspring में, ठीक है. We are not the exact copy. जो parents होते हैं और offsprings होते हैं वो दोनों कार्बन कॉपी नहीं होते हैं. देयर आर डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस किस वजह से होते हैं? दिस डिफरेंसेस इज ड्यू टू द वेरिएशंस. ओके, सो वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम डिफरेंसेस which occur in offspring as compared to the parent generation. Now variations जो है they passes from generation to generation. In sexual reproduction, both similarity and variation are clearly observed among the offsprings of same parents. So sexual reproduction is the main basis of variation as we all know, और उसमें हमें सिमिलैरिटी भी देखने को मिलती है, रिजेम्बलेंस भी देखने को मिलती है पेरेंट से, और कुछ आपको नए कैरेक्टर्स भी दिखेंगे. दैट इज टर्म्ड एज वेरिएशन. ड्यू टू वेरिएशन एनी टू पर्सन रियली शो कंप्लीट सिमिलैरिटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. Why is asexual reproduction is not ideal for variation? Why it is not ideal, या कह सकते हैं कि why it does not support variation? So as we all know, asexual reproduction it involves only single parent. सिर्फ एक ही parent involve होता है, ठीक है. And the offsprings which are produced from that parent, वो उसकी क्या होते हैं? कार्बन कॉपी होते हैं. So asexual reproduction involves a single parent and is hence not ideal for facilitating variation. Organisms raised are exact copy of their parents and they are known as clones. Due to their identical set of chromosomes, they exhibit no or very little variations. So due to the exact similarity, exact as they are the exact copy, so the chances of variation is nil. These variations may be either due to some environmental factor like light, scarcity of food, abundance of food, temperature, etc., or due to some inaccuracies in DNA copying. Out of these two factors, only mutation is heritable, but the quantum of variation would be too little that would take too many years to show effect. Simply asexual variations जो हैं they do not we can say they do not cause variations, और अगर वेरिएशन होता भी है सो दैट इज़ इन टू लिटिल अमाउंट की इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट विल टेक मैनी ईयर्स यू कैन से टू शो देयर इफेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ
genetic variation in asexually reproducing organism. So the source of genetic variation in asexually reproducing organism is mutation, because it is transferred from one generation to next generation. और mutation क्यों होता है? Due to inaccuracy in DNA replication. जब DNA replication होता है, that is DNA copying होता है, उस समय जो भी inaccuracies होती हैं, जो भी मीन्स हम कह सकते हैं कॉपिंग करने में जो भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, दैट रिजल्ट्स इन म्यूटेशन. Variation useful for the survival of a species. Justify. So variations, as we all know, it is useful for the survival of species over time. If you talk about long period of time, then for the long period of time survival is only possible when it will have variations, because variations जो है it make the species better adapted to that changing environment, क्योंकि वेरिएशंस जो है इट रिजल्ट्स इन अडेप्टेशन फाइनली. ओके, तो अगर इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ वाज सूटेड टू अ पर्टिकुलर निची, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर रही है, पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई भी पॉपुलेशन मिल रही है, और अगर उस पॉपुलेशन में कोई उस इन्वायरमेंट में जहाँ वो एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे बहुत ड्रास्टिक ऑल्टरेशन हो जाए, तो पॉपुलेशन क्या होगी? इट विल बी wiped out, it will be thrown away. So but there will be some variations will be present in few individuals, and that will help them to survive in that adverse situation. Okay, for example, if the temperature of water increases by global warming, most bacteria would die, but the population of heat resistant bacteria would survive here. These few variants would be resistant to the heat and would survive and grow further. So this is the reason why variations, they are useful for the survival of a species. So these are the few questions. Thank you everyone.